Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up case scenario number 7 and 8. In case you have not seen the previous videos or you have not seen the audit MCQ booklet series, you can refer to the description box below. I have given the link over there. Okay, so let's begin with case scenario number 7. Global Trade Securities India Limited is a listed company having been listed at BSE and NSE. So this is a case of listed public company. It was incorporated around 4.5 years back in June 2016 and has its registered office at Connaught Place, New Delhi. The authorized and paid up share capital of the company is 25 crore rupees. Okay. GTSIL is duly registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for providing merchant banking services. The company offers a varied range of services including issue management, handling of buyback of shares, debt and equity syndication, mergers and acquisitions, listing and delisting, etc. GTSIL is well established and reputed name among the regulatory authorities, government agencies, law firms, share brokers, mutual funds, banks and other prominent organizations. Okay. The company is being managed by 9 directors, out of which 3 are independent directors. So there are total how many directors? There are total 9 directors, out of which 3 are the independent directors. Now of the other non-independent directors, that is 6, 2 are non-executive. Out of this also we have a bifurcation. 2 are non-executive directors and 4 are executive directors. Now the 4 executive directors, that is Kant, Shrishti, Reena and Rohan, are energetic, young and dynamic professionals with vast experience in the field of merchant banking. In the current financial year 2021, a chance scrutiny of accounts revealed that during the last financial year, by oversight, Rohan, who heads the new issue division of the company, had drawn remuneration in excess of the limits provided by law, by the relevant provisions of the law. Okay, the shareholding base of the company is quite wide and therefore the number of small shareholders having stake in the company is substantial. So small shareholders की definition क्या होती है? जिनकी जो shares की nominal value है वो up to 20,000 rupees की होती है. जिन shareholders की shares की value nominal value up to 20,000 rupees की होती है, वो आपके small shareholders होते हैं. Now these small shareholders are saying that we want to have a small shareholders director. That is why they are saying it is so happened that some of them wished to appoint Mukund, a seasoned finance professional, as small shareholders director on the board of the company. After due process, Mukund was appointed by the company as director to represent the small shareholders. इसका appointment जो हुआ होगा as per which section हुआ होगा? Section 151 के according सारे के सारे compliances किए गए होंगे. That is small shareholders ने notice दिया होगा company को, required number of small shareholders ने notice दिया होगा company को, and based upon that the SSD would have been appointed as per section 151. Now during the financial year 1920, the profits of the company rose around 7 crores in comparison to the previous year. Therefore, a rise in the dividend per share was expected to be approved in the AGM. Now accordingly, a dividend of rupees 6 per share was declared as against 4 in the preceding year, and the same was approved in the AGM held on 25th of September 2020 through a video conferencing as permitted by MCA. It is proven fact that pestle analysis has always been a critical aspect for the success of an organization. So keeping this crucial fact in view, the directors of the company, desiring to improve the political understanding after following the due procedure of law in this respect, made one-time political contributions. Okay, so they are making political contributions also. Political contribution comes under section 182. Section 182 के हिसाब से we'll have to see the compliances. Now they are also making one-time political contribution of certain amount in the current financial year to Public Vikassheel Dal, which is one of the prominent political parties of the country, duly registered under section 29A of the Representation of People Act 1951. Now according to the case scenario, small shareholders got appointed Mukund as small shareholders director on the board of the company. By choosing the correct option, state as to minimum number of small shareholders who might have assembled together to get Mukund appointed as director to represent them. So section 151 के according, what is the criteria? What is the minimum number? So at least 1000 or 1/10 of the total number of small shareholders, whichever is lower.
needs to give the notice to the company कि हम इस बंदे को अपॉइंट कराना चाहते हैं एज दी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, या फिर कंपनी सुओ मोटो भी कर सकती है. बट इस केस में सिंस दी स्मॉल शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू गेट अ डायरेक्टर अपॉइंटेड फ्रॉम देयर साइड, तो इस केस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि उनको बेसिकली एटलीस्ट 1000 ऑफ देम या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर whichever is less. They were the minimum required number of small shareholders which were required to give the notice to the company. So let's see, the minimum number of small shareholders must have not been less than 1000 or 1/10 of the total number of such shareholders whichever is lower. तो यही criteria बोल रही थी अभी मैं आपको. The minimum number of small shareholders must have not been less than 1000 or 1/10 of the total number of such shareholders whichever is higher. तो यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी higher बोल के. थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स मस्ट हैव नॉट बीन लेस देन 1000 और 1/5. 1/5 नहीं होता, 1/10 क्राइटेरिया होता है. द मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स मस्ट हैव बीन नॉट लेस देन 1000 और 1/5, तो 1/5 आपका क्राइटेरिया होता ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Let's move on to the next question. Question number 2. From the case scenario, it is evident that the company made political contributions of certain amount to Public Vikasshil Dal, a prominent political party of the country. As the company is in existence for less than 5 years, how much amount it might have contributed to the political party in question? तो इस केस में if you know कि आप कुछ भी अमाउंट, बस इसमें क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 182 में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते अगर तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर आपकी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आए हुए लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स हुए हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द नॉन एप्लीकेबिलिटी, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है एंड उसके बाद आप जितना मर्जी अमाउंट चाहे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो यहाँ पर उन्होंने इफ यू सी लिखा हुआ है कि उसको एग्जिस्टेंस में आए हुए लेस देन 5 ईयर्स हुए हैं, बट उसको एटलीस्ट कितने साल हो जाने चाहिए, 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन था कि वो यहाँ पर 2016 इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अराउंड 4.5 ईयर्स बैक इन 2016. तो दैट मीन्स कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स से तो ज़्यादा हो गए. तो सेक्शन 182 की नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर तो ये नहीं आ रहा है सिंस इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो, राइट. सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इट कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सो एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अमाउंट विद इन द लिमिट ऑफ 5% नो, 7.5% नो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी इज इनवैलिड नो. सो ये सारे पॉइंट्स आपके इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ए इन दिस केस, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. The above case scenario states that Mukund was appointed as small shareholders director on the board of the company. To be a director of small shareholders, what is the nominal value of shares which such director is required to own? So section 151 बहुत clearly बोलता है कि it's not necessary for the small shareholders director to hold any number of shares, any value of shares. It is not necessary for him to hold shares irrespective of the, not irrespective, he does not need to hold any shares, ठीक है. सिंपल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 151 की. तो सच डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स, तो काट दो पहली. इज रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स काट दो. इज रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स काट दो. सीधा आ जाओ जहाँ पर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू ओन. सो सच डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स इन एनी नॉमिनल वैल्यू of any nominal value in the company prior to his appointment as the small shareholders director, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉमिनल वैल्यू, मिनिमम नॉमिनल वैल्यू जो थी या नॉमिनल वैल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स को डिफाइन करने के लिए दे रखी है सेक्शन में. एंड डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी शेयर्स, ठीक है. इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर हिम. नेक्स्ट इज इन दिस केस सिनेरियो द नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स द वर्ड इंडिया. In this case scenario, the name of the company includes the word India. In case a company is desirous of including the words British India in its name, which of the following options is applicable? So British India नाम आप रख ही नहीं सकते. That is why यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए none of the above, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रखने के लिए इतनी ऑथराइज कैपिटल चाहिए, रखने के लिए इतनी ऑथराइज कैपिटल चाहिए. तो नो, you don't need to have, you cannot actually keep a name or keep the words British India in your name. That is why the correct option in this case is D. Let's move on to the next question. Question number 5. In the above case scenario reveals that Rohan, one of the directors, had withdrawn remuneration in excess of the limit prescribed by the relevant provisions. As regards recovery of excess remuneration drawn by him, which of the following option is applicable? So recovery of
एक्सेस रेम्यूनरेशन की बात करें तो ये आपका सेक्शन नंबर 197 के अंदर गिवन है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को एक्सेस रेम्यूनरेशन पे हो जाता है तो दैट अमाउंट हैज़ टू बी रिफंडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और लेसर पीरियड एज मे बी डिसाइडेड। लेकिन इस अमाउंट का आप वेव भी कर सकते हो अगर आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट इट बिकेम रिफंडेबल। ठीक है, तो देयर इज अ ऑप्शन कि अगर आप वेव करना चाहते हो तो वेव कर सकते हो, बट वैसे अगर आपको देखा जाए रिकवरी की तो 2 साल का टाइम होता है। ठीक है, लेट्स सी। The company shall not waive the recovery of excess remuneration paid unless approved by a special resolution within 1 year from the date. No, 1 year नहीं होता, 2 years होता है। The company shall not waive the recovery of excess remuneration paid unless it is approved by the special resolution within a period of 2 years from the date such amount becomes refundable. So this is the correct answer absolutely as per section 197. The company shall not waive unless approved by CG. No. The company shall not waive the recovery of excess remuneration paid unless approved by the special resolution within a period of 3 years, not 3 years, 2 years. So the correct answer in this case is B. Let's move on to the next case scenario number 8. Case scenario number 8. Hibiscus Pargear Limited, an unlisted company. So this is a case of unlisted public company. Is one-stop shop for all the custom-built electrical switchboards, battery chargers, and bus ducts. It manufactures comprehensive range of products from small industrial distribution boards to the large state-of-the-art intelligent motor and power control centers. The registered office of the company is located in Belthangadi and 2 manufacturing plants are situated at Dabaspet industrial area near Bengaluru. HPL has been incurring huge losses for the last 3 years and they were having accumulated losses to the extent of rupees 19 crores as on 31st March 2019. The board of directors had been evaluating all the possible options to bring the company back on track. One of the options considered was CDR with the creditors through compromise. So this is a case scenario based on compromise arrangements and amalgamation. अभी तक तो यही लग रहा है. Let's see. Following data was extracted from the latest audited financial statements of HPL as on 31st March 2019. Okay. So this is the extract. The secured creditors are डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है, फिर कैश क्रेडिट है. कितना अमाउंट है? रुपीज इन करोर्स. ओके, सो द अमाउंट इज 20 करोर्स. डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट है 1.6 करोर्स इज द इंटरेस्ट ड्यू, अक्रूड इंटरेस्ट. कैश क्रेडिट की बात करें तो इट इज 15 करोर्स. इट वॉज अवेल्ड फ्रॉम द नेशनल कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बुक डेट्स एंड दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ओके, let's move further. Now we have the unsecured creditors in the extract. Unsecured creditors में there is a loan from the directors at the rate 8%. 30 crores का amount है. Trade payables हैं, creditors हैं 18 crores 0.4. Total हमारे पास जो debt है वो है 85 crores. Consequently, a scheme of corporate debt restructuring was consented by 78% of the secured creditors and all the other stakeholders. तो अगर CDR की स्कीम को अप्रूव करवाना होता है तो आपको एटलीस्ट कितना अप्रूवल चाहिए होता है, कितने लोगों का कंसेंट चाहिए होता है? तो एटलीस्ट 75% लोगों का कंसेंट चाहिए होता है. तो यहाँ पर तो 78% मिला है, विच इज इन लाइन विद दी सेक्शन 230. सेक्शन 230 के अंदर बताया हुआ है ना सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने दिन में कैसे आपको नोटिस देना होगा. पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा टू द ट्रिब्यूनल विद दी एफिडेविट, फिर नोटिस सेंड करना पड़ेगा टू द क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे. देन यू विल हैव टू गिव देम टाइम कि 1 महीने का टाइम है, आप रिस्पॉन्स दे दो. वोट कर सकते हो, किस तरीके से वोट कर सकते हो वो सब चीज़ें आप बताओगे. अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेसिफाइड परसेंटेजेस आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो एंड सो फोर्थ. तो सेक्शन 230 का यहाँ पे अभी तक लग रहा है कि सेक्शन 230 पर बेस्ड ये केस सिनेरियो हो सकता है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड दी होल केस सिनेरियो एंड डिसाइड कि क्या क्या प्रोविजंस हमारे इसमें रेलिवेंट होने वाले हैं. ठीक है, तो ब्रीफ आउटलाइंस बता रखी है इन्होंने स्कीम की कि स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट इज द 8% डिबेंचर होल्डर्स वर टू टेक द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट द करंट वैल्यूएशन ऑफ 12 करोर्स, जिसकी बुक वैल्यू अभी 8 करोड़ की है, in part payment of their dues and to provide additional 10 crores at the rate 9% per annum, which will be secured by a floating charge on the assets of HPL. Interest accrued on debentures was to be immediately paid. Okay. National Commercial Bank agreed to reduce the interest rate from 11% to 8% per annum on cash credit till next 1 year. It also in principle agreed to provide 3 crores as non-fund based limits for a period of 2 years. Okay.
Directors were to waive off all the outstanding interest payable to them up to 31st March 2019 and also had no objection if the interest rate on their loans was reduced to 6%. Okay. Suppliers and other creditors consented to waiving off their debts to the extent of all the amounts outstanding for a period beyond 2 years as on 31st March 2019. In a sense, HPL was required to pay only for the last 2 years to the suppliers and other creditors. Very good. Excuse me. Patents and goodwill were to be written off to the extent rupees 0.5 crores. Write off करना है. Value of obsolete items in the inventory was quantified to 0.8 crores and was to be written off. Bad debts identified to the extent of 0.75 crores were to be written off. Okay. Remaining freehold property worth rupees 15 crores was revalued at rupees 23 crores. ठीक है. बहुत ज़्यादा कहानी दे रखी है, पूरी की पूरी स्कीम बता दी उन्होंने हमें. After the above exercise, an application for the compromise was filed by HPL with the jurisdictional NCLT, in short the tribunal, and made the necessary disclosures by filing the affidavit. ये सब भी कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 230 के अंदर दिया हुआ है. The disclosures contained all the material facts in respect of HPL, a copy of scheme of CDR as consented to by the creditors, methodology on the basis of which the creditors had been identified, creditors' responsibility statement in the prescribed form, safeguards for the protection of other secured and unsecured creditors, auditors report, valuation report, etc. तो आपको पता होगा सेक्शन 230 के अंदर बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको एप्लीकेशन के साथ साथ लगा के देनी है. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव दी ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट में वो आपको देना पड़ता है. देन इफ देर इज़ एनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इफ एनी देर इज़ एनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो भी आपको बताना पड़ता है. अगर कोई स्कीम ऑफ CDR है जो कि कंसेंटेड है बाय 75% और मोर ऑफ दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, 75% और मोर आपको इन वैल्यू चेक करना होता है. उसके साथ साथ आपको देना पड़ता है ये स्कीम के साथ साथ यू हैव टू गिव दी क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर क्रेडिटर्स, ऑडिटर की रिपोर्ट देनी पड़ती है ऑन दी लिक्विडिटी पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग. देन यू हैव टू गिव दी स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट RBI गाइडलाइंस फॉर CDR शैल बी अडॉप्टेड. यू हैव टू गिव दी रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी होती है. सो ये सब आपका सेक्शन 230 के अंदर मेंशन्ड है. इन लोगों ने भी वो सारी चीज़ें दी हैं. ठीक है, प्राइमा फेसी तो सब चीज़ें लग रही हैं. लेट्स सी. After hearing the application, the tribunal gave necessary directions in respect of conducting the meeting of creditors, fixed the date and place of meeting, gave the directions for the appointment of chairperson and scrutinizer, fixed the quorum, stated the procedure to be followed at the meeting, including the methodology of voting, which could be either in person or by proxy or postal ballot or by voting through electronic means, the time within which the chairperson was required to report the result of the meeting to the tribunal. तो सब कुछ उन्होंने अपना बता दिया. To ensure transparency and that may facilitate all the stakeholders to take proper decisions, extensive disclosures were made by HPL along with the notice for the meeting, and then the company, as per the directions of tribunal, sent notices to all the creditors and to all those who were entitled to receive it. Further, it was also sent to all the relevant regulators seeking the representation. So ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 230 के अंदर पढ़ चुके हैं. जब आप नोटिस देते हो टू द मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, तो आप उनको 1 महीने का टाइम देते हो कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना वोट दे सकते हैं. ऑल्सो इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन तो वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं. बट ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए क्राइटेरिया कि जो लोग मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ दी शेयर होल्डिंग रखते हैं वो ही ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, या जो लोग मोर देन इक्वल टू 5% ऑफ दी more than equal to 5% ऑफ दी आउटस्टैंडिंग डेट होल्ड करते हैं वही लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. नहीं तो ऐसे तो छोटे छोटे क्रेडिटर्स और छोटे छोटे शेयर होल्डर्स भी आके कंप्लेन करने लग जाएंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की केस में. तो इसीलिए उनको अवॉइड करने के लिए ये लिमिट बना रखी है. ठीक है, अगर यहाँ पर अब नोटिस करोगे तो यहाँ पर उन्होंने फिर रिप्रेजेंटेशन की बातें करी हैं कि उन्होंने रेगुलेटर्स को भी नोटिस भेजा है. तो नोटिस आपको रेगुलेटर्स को भी भेजना होता है, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ROC हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, लिक्विडेटर हो गया, ये इन सबको भी भेजना होता है. और इनको ना रिप्रेजेंटेशंस के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 30 डेज़ के अंदर आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो. अगर 30 डेज़ में वो रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो मान लिया जाता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, चलो. In addition, the notice was also advertised in English in Times of India and in the local Kannada newspaper Udyavani in Kannada language. The company also published the notice on its website. तो ये भी आपके advertisement of notice वाले provisions भी section 230 के अंदर mentioned है.
कि आपको ये सब चीज़ें करनी होती हैं. Now it is worth noting that United Belts Private Limited, एक प्राइवेट कंपनी है, supplying some of the components to HPL, had raised the objections to the proposed scheme of compromise after receiving the notice. तो इन्होंने objections raise कर लिया, यहाँ पर objections की बात आ गई. Okay. As on 31st March 2019, HPL was required to pay 0.8 crores to UPPL for the supply of various components. तो कितना ड्यू है अमाउंट? इसका अमाउंट ड्यू है 0.8 करोड़. टोटल डेट कितना था हमारा? टोटल डेट ऊपर दिया हुआ था ना, टोटल डेट था हमारा 85 करोड़, और इसको हमें कितना पे करना था? सिर्फ और सिर्फ 0.8 करोड़. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 85 करोड़ एंड 0.8. लेट्स कैलकुलेट 0.8 डिवाइडेड बाय 85 करोड़. तो ये कितना आ रहा है? ये तो आपका आ रहा है 0.94%. कितना आ रहा है? 0.94%. तो क्या ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकता था? नहीं, इसकी कोई नहीं सुनेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो डेट है, आउटस्टैंडिंग डेट है, वो बहुत ही कम परसेंटेज होल्ड कर रहा है. एटलीस्ट 5% होता तो हम इसकी बात सुन लेते. तो इसके ऑब्जेक्शंस क्या हो गए? बेकार. The meeting was duly convened at the majority representing 78% of the value of creditors agreed to the scheme of compromise. The tribunal provided for the protection of minority creditors and by an order sanctioned the scheme of compromise relating to corporate debt restructuring after considering the certificate issued by the auditor of HPL. तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है. जब भी स्कीम की बात करें तो स्कीम आपकी जो है वो इसके अंदर आपकी डुअल मेजॉरिटी वाला प्रोविजन लगता है कि डुअल मेजॉरिटी होनी चाहिए बेसिकली, जिसमें इन नंबर्स भी आपका जो है मेजॉरिटी अचीव होनी चाहिए. और इन वैल्यू के लिए हम देखते हैं 3/4 एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू, और इसके लिए देखते हैं मोर देन 50%. तो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स जो होने चाहिए वो मोर देन 50% होने चाहिए, प्लस देयर वैल्यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग मोर देन इक्वल टू 3/4 ऑफ दी क्रेडिटर्स. ठीक है. तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपकी जो है स्कीम पास हो पाती है. तो अब यहाँ पर 78% है, तो मान के चलते हैं वैल्यू की बात कर रहे हैं, और मेजॉरिटी है, लिखा हुआ है वैसे भी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 78%, विच मीन्स डुअल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. तो ऑर्डर आपका बाइंडिंग हो जाएगा अगर ड्यूअल मेजॉरिटी मिल जाती है. तो यहाँ पर मिल रही है तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बाइंडिंग हो जाएगा. Also, they have considered the certificate by the auditor of HPL. The order of tribunal was filed with the ROC by HPL within the specified period of time. तो आपको जो ये ऑर्डर होता है ऑफ द ट्रिब्यूनल कब तक फाइल करना होता है? यू हैव टू फाइल इट विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर. ठीक है. तो यहाँ पर इनको 30 days के अंदर अंदर ये ऑर्डर फाइल करना होगा टू द ROC. ठीक है. ये जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ. सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑडिटर का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर आपको पता है सेक्शन 230 कहता है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल एक कंपनी ऑडिटर ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो स्कीम का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो होगा एज पर दी सेक्शन 133 जो एएस मेंशन्ड है उन्हीं के हिसाब से आपका जो प्रपोज स्कीम है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसी तरह से कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, तभी आपकी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम जो है वो सैंक्शन की जाती है. तो सर्टिफिकेट भी इन्होंने कंसिडर कर लिया, सब कुछ सही हो रहा है अभी तक. लेट्स रीड फर्दर. However, in the dual course of time, HPL faced many practical hurdles in the implementation of scheme of compromise sanctioned by the tribunal. तो सेक्शन 231 कहता है कि ट्रिब्यूनल जो है जब वो ऑर्डर पास कर देता है सेक्शन 230 में, तो उसके पास पावर होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करेगा और साथ साथ वो डायरेक्शंस भी देगा जहाँ पर भी उसको लगता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं. पर वहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो ये उसने ऑर्डर पास किया सेक्शन 230 का ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा या फिर कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी इसको क्योंकि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगी स्कीम के हिसाब से, तो उस पर्टिकुलर केस में वो ट्रिब्यूनल चाहे तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू कर सकता है. तो सेक्शन 231 ऐसा बोलता है. लेट्स सी क्वेश्चंस क्या फ्रेम्ड है. तो बेसिकली अगर अभी तक देखें तो पूरा केस सिनेरियो सेक्शन 230 और 231 के आसपास ही रोटेट कर रहा था. तो लेट्स सी इसमें क्वेश्चंस किस सेक्शन पर बेस्ड है. The case scenario states that an application for compromise was filed by HPL with the jurisdictional national company law tribunal along with all the necessary documents including the auditor's report. From the following options, choose which one of the following choose the one which the auditor must include in the auditor's report when the application for compromise relates to the scheme of corporate debt restructuring. Let's see what options they have given. That all the fixed assets of HPL have been properly revalued. नहीं.
For the purpose of compromise, valuation report is submitted. No. The tribunal, the total value of creditors shown in the financial statements of HPL as on 31st March 2019 is true and correct and there are no material discrepancies. नहीं, उसको तो सबमिट करनी होती है डिटेल कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर एएस होगा अंडर सेक्शन 133 जो मेंशन्ड है, दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimates provided by the auditor. हाँ, सेक्शन 230 के अंदर ये भी था कि जो नोटिस होगा, नोटिस नहीं सॉरी, जो एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडेविट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट जाएगी कि जो पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग पर लिक्विडिटी कैसे रहने वाली है. तो इसमें ऑडिटर की एक रिपोर्ट इशू होती है एज पर सेक्शन 230 सब सेक्शन 2 कि आपको एज रिपोर्ट द ऑडिटर विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द लिक्विडिटी पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग. तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करी थी. अभी मैंने वो सेक्शन 133 वाली बात गलत बोल दी क्योंकि वो तो बाद में आएगा ना, कि जब स्कीम आपकी प्रपोज स्कीम आपकी अप्रूव हो रही होगी तब उस टाइम. अभी तो फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे थे जब एप्लीकेशन फाइल हो रही है. तो यहाँ पर तो आपका डेफिनेटली यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए. फिर भी हम एक बार डी ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं, दैट ऑल द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल आर ट्रू एंड करेक्ट एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ दिस. नहीं भाई, वो ऑडिट थोड़ी ना कर रहा है. तो सही ऑप्शन आपका इसमें क्या है? सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एक रिपोर्ट जाती है ऑडिटर की जिसमें पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग लिक्विडिटी पर उसकी रिपोर्टिंग जाती है. So that is why this particular point is correct. Let's move on to the next question. According to the case scenario, with a view to ensure transparency that might facilitate all the stakeholders to take proper decisions, extensive disclosures were made by HPL along with the notice for the meeting, and notices were sent to all the creditors and all those who were entitled to receive it. As regards the adoption of compromise, the notice needs to provide that the persons to whom the notice is sent may vote in meeting either themselves or through proxies और बाय पोस्टल बैलेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी. 21 डेज गलत है, 1 मंथ, 14 डेज, 7 डेज. तो ऑब्वियसली 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, let's move on to the next question. Question number 3. It is stated that in the case scenario that United Bells Private Limited, supplying some of the components to HPL, had raised objections to the proposed scheme of compromise. For raising any objection to the scheme of compromise, the value of UPBL as trade creditor in the books of HPL must be तो भैया 5% होनी चाहिए थी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वो तो 9.94% बन रहा था. तो इस केस में the correct answer should be not less than 5% of the total outstanding debt as per the audited financial statements. Yes, 10% गलत है. शेयर होल्डिंग के लिए होता है ये. 1 करोड़ वाली कोई लिमिट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नॉट लेस देन 25% भी आपका गलत ऑप्शन है. तो करेक्ट आंसर आपका इस केस में क्या है? ए. Let's move on to the next question. The notice was also sent to all the relevant regulators seeking their representations. Representations का reply करना होता है 30 days के अंदर which was to be made within a specified period from the date of receipt of such notice. From the following options, choose one. Which one of the following specifies the correct time period? तो 10 days, 15 days, 30 days, 45 days भी गलत है. The correct answer इसमें क्या है? सी. अगर आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सिर्फ सेक्शन 230 पढ़ा हुआ है ना तो आपको ईजी लग रहा होगा केस सिनेरियो अभी तक. According to the case scenario, the tribunal, while providing for the protection of minority creditors, sanctioned by an order the scheme of compromise relating to CDR. After considering the certificate issued by the auditor, the auditor's certificate sanctioning stage shall be to the effect that HPL duly followed all the procedures required for compromise as required under Companies Act and all the relevant rules. All the documents submitted by HPL to the tribunal for the purpose of compromise are true and correct, duly verified. The accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise is in conformity with the prescribed accounting standards under section 133. This is the correct option. The auditors have reasonable grounds to believe that HPL will continue the business as a going concern after implementation. नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देनी होती. So that is why the correct option in this is C. Let's move on to the next question. The given case scenario states that in due course of time, HPL faced many practical hurdles in implementation of the scheme of compromise sanctioned by the tribunal. तो इस केस में मैंने आपको बताया था सेक्शन 231 आ जाता है, जहाँ पर ट्राइब्यूनल पहले तो कोशिश करेगा कि इंप्लीमेंट हो जाए. अगर नहीं हो पाती तो उस केस में क्या होता है? वाइंडिंग अप ऑर्डर. Which of the following options is applicable if the tribunal is satisfied that the sanctioned compromise cannot be implemented satisfactorily with or without modifications and the company is unable to pay its debt as per the scheme? HPL and every officer of the company who was in default shall be liable for fine? No. The tribunal may make an order for winding up. Company shall be liable to pay fine? नहीं भाई, फाइन वाइन नहीं पे करना.
वाइंडिंग अप हो जाएगा. ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, नो. करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है. So that's all about this video guys. Thank you so much for watching the video. I hope you liked the content. If you did, तो आपको पता है क्या करना है. Like, share and subscribe. That's all. So yeah, take care of yourself, take care of your family, and all the best for your exams. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.